How to delete a file that won't delete। वीडियो में रन कमांड के थ्रू उन फाइल को डिलीट करने का प्रोसेस बताऊंगा जो फाइल कंप्यूटर पर डिलीट करने पर भी डिलीट नहीं होती। क्लिक विंडोज सर्च बार एंड टाइप cmd। राइट क्लिक द कमांड prompt and click run as administrator। टाइप cd and press enter। इस कमांड के थ्रू आप रूट डायरेक्टरी सी ड्राइव में रिटर्न करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पर। If you want to change your drive C to D, type D colon and press enter। मेरे कंप्यूटर में सिर्फ एक ही ड्राइव है इसलिए इसने अपनी ड्राइव चेंज नहीं की। फाइल या फोल्डर को डिलीट करने के लिए सबसे पहले हमें फाइल या फोल्डर का पाथ पता होना चाहिए। मैं इस वीडियो में आपको एक क्विक और इजी वे से फाइल का पाथ मालूम करना बताऊंगा। गो टू द फाइल डेस्टिनेशन। Click Windows search bar and type run। Drag file to drop the run window। Double click to select the file path and press Ctrl plus V key on your keyboard to copy file path। Type cd on command prompt, press Ctrl plus V key on your keyboard to paste the copy file path। Delete file name and extension end of the file path and press enter key। Type del double quotation file name and extension and double quotation and press enter key। You can check again your file is deleted on your computer। Now picture folder is empty on computer and file was deleted।